Mistake is a mistake. So let's start with our work. We were into that globalization chapter of economics, correct? And we are going to, did I say factors enabling globalization? I'm finished. Check in your notebook. Factors enabling globalization, completed. After that, liberalization also completed. WTO I have to start. Challenges we have done. So to the heading as World Trade Organization. Write down this. I'll give you intro, then we'll go ahead. If it has been a regular practice of students who are having exams, they are taking leave. That's fine. And then, how does it reach to me that you are really going for your exam holiday or something else? Are you understanding it? So we always believe only one thing. If you are absent, then I should get a leave note. Write down below. What is that? Soon after Second World War. This is I'm giving background. What I'm doing. Soon after the Second World War, they'll ask me. You don't know. Sir. Who is this? Soon after the Second World War, global trade and uncontrolled competition. Soon after the Second World War, global trade and uncontrolled competition across the developed with that of developing nations of Asia and Africa. Developed with that of developed nations, with that of developing nations of Asia and Africa. One more sentence, second point. There was an urgent need. There was an urgent need of OF for a global trade organization. There was an urgent need of global trade organization. Urgent need with the main task. With controlling. With the main task of controlling unfair trade practices and uncontrolled unfair trade practices and uncontrolled uncontrolled animosity. How do you write up? I will not. Instant CBSE. Write up animosity. With my pronunciation, you can get it. Animosity. That's it, right? Let me allow you to face some challenges. Animosity across different nations.
Can you explain the meaning of that? I like it. Why only the word? I have to explain the whole sentence. Across the different nations. Now read these two lines and then come back to me. Is my method of introducing WTO is correct? For that you know what is WTO. ये bag में क्यों correct my friend? Everyone knows Second World War come to an end, and any news channel nowadays keep hinting it. Third World War, Third World War. As if they will get a PR rating for that. शुरू हो चुका है Third World War, whatever. The last 2 years they are doing, and the next 2 years they will do. Yeah. But as far as certain Nostradamus predictions, if at all such war hit, and we feel that our board exams will be cancelled, we will not be alive. Then it might that what is that movie? Kalki Avatar has to come. Look, I'm linking so many things together. बच्चा ने एक ही point बताया, board exam cancel. Right. But you are not alive, sir. As if you are alive. Then we always feel, what does this WTO means? The name is suggesting. On one side, we have a developed nation of West. On the other side, any other person? Developed nation of West. You look good here. School का tension में बैठा, relax करो ना. School का uniform पहना है, और यहाँ हमारे uniform. हाँ तो अच्छा है ना, I really like it. तो क्यों होता है तो उसमें tension में क्यों बात करते हैं? I feel proud to wear the uniform, like now you are wearing UP. Why the unique? कौन बोला? So the uniqueness of you saying it. आपके दोस्त का tag खींचने के लिए लोग अरे नहीं it's okay. No, I also agree. So we believe on one side the West people want to trade anything and everything. On other side East they do not have nothing to give you. I mean, who will sit on the head and do the trading? The West. Who will be downwards? My baap kuch rahega, that will be the East. So unfair trade competition. You understand what is unfair? I have seen with the friends also. I have seen when you are teaching the your own person who is sitting next to you. तो थोड़ा आपसे बोलेंगे ना आप आराम से सिखाते रहते हैं। आप उसे डबल बोलेंगे ये फैनी ये जो भी बोलता सुन मतलब he shows his superiority है ना नहीं वो ऐसा नहीं वो मुझे मतलब भाग यहाँ से खत्म but you are below him and he is above him and then what I mean देखो चाय समोसे लेके उन्हें तब सिखाया मतलब you have taken everything and then you are so India's condition soon after Second World War like this. America is to given us rice and wheat, and to give us rice and wheat they pass special laws in their parliament, and every time rice and wheat America or some other they used to insult us like anything. I mean the exact opposite is happening. है ना इधर उधर क्या है बासमती राइस चाहिए वहाँ से घूम के ले हाँ Saudi Arabia and Abu Dhabi is selling basmati rice to Pakistan and bought from India. Made in India and Pakistan sticker है made in India नहीं पर मेरा है और मुझे घूम के लेना पड़ता है वो तो अलग बात है वो मैं बाद में सिखाता हूँ. So this WTO is very simple. It will try to reduce the barriers. What is those barriers? Remember I said trade barriers? Unfair trade practices. Americans even today give a lot of subsidies to their farmers. What are subsidies? Cash help, kind help. Abhi wants Smith to give the help to, what is his name? Yes, sir. Tejas me. उसके नीचे वाला Tell me. Very good. He seems that I am the developer. And he says, sir, I am developing this. Beach में बच्चे बच्चे underdeveloped this.
इन दोनों से ट्रेड के बीच में जो टुकड़ा टुकड़ा कहते हैं इन लोगों के झपटा मत लीजिए तभी क्या करें इट्स लाइक टू monkeys quarreling and we are all the cats we are waiting एक कब quarreling बंद करेगा और हम जाके चीज के आएंगे तब डब्ल्यूटीओ बोलते हैं डरने का कोई जरूरत नहीं मैं है ना स्मिथ को बोलेगा भाई जरा तेरे पास अगर बहुत ट्रेड करने का माल है तो मेरे पास दे दे बोलेगा क्यों आई विल गिव इट टू योर फ्रेंड but whatever money he is going to give you he is not going to give him directly it will be coming through me so will I allow Smith to dictate on the name और बेचारा अंडर बोला हम हाँ रुको तो I'll ask Smith how much you are supplying वो बोलता दो टन देता हूँ मंथ में वो बोलता दो टन 2000 kgs तो बोलता ठीक है ना 1.5 टन वो लेगा बाकी जो 500 kg मैं आपने बांटूंगा so there are various steps through which WTO has controlled the rich trade world trade. Today there is no diplomatic groupism. Remember World War I? Germany on one side, America on the other side, England coming on one side, then French going to the other side, which led to the which war? First and Second World War. East India Company came not only to India, there were 114 wings of East India Company who came to all over Asia. One only came to India. What did they came here for? Trade only. Then what did they do? Rule only. What did they take away? Except donkey, everything is taken. No sir, donkey ने पीछे पीछे लेके गया. The British writer has written how beautiful is this animal called donkey. So I mean, it's a donkey, beautiful. But it eats less and works more. और उधर के डोंकीज लंदन के ईट मोर नो वर्क एट ऑल है ना तो टू बी वेरी फ्रैंक दे डिडंट इवन लीव आवर डोंकीज दे टुक शायद यही पाकिस्तान में पड़ा ड्यूरिंग कोविड दे वर एक्सपोर्टिंग ऑल डोंकीज टू चाइना तो लोगों ने बोला ब्रिटिश इंपीरियलिज्म थ्रू पाकिस्तानी रूल अमेरिकन्स डिड नॉट नीड बट द चाइनीज नीड द डोंकीज तो जितना भी लोन चाइना के थ्रू आया लोग ने डोंकीज बेच के उसको कम कर एंड डोंकीज बोलेगा लोन लिया ये डोंकी और मुझे बेच रहा है ना तो वी ऑलवेज से दिस ट्रेड इज अ रियल फनी वर्ड व्हाई इट्स अ फनी वर्ड who has a surplus will dictate from people who has deficit so who will stop that problem today there are more than 219 member countries but initially 166 or 177. We believe all the member countries would be allowed to trade unequal or equal terms. Equal terms. Who will reduce the conflicts? Who will reduce the smooth trade? And who will encourage fair competition? So you see, buying an apple in India is so easy. We are not going to teach you how to buy an apple, right? And the Washington apple comes very cheaper than the Himachal apple. If you have seen that red, delicious red लिखा रहेगा, sticker पे लिखा रहेगा, वो Washington apple है, 99 rupees per kg. Himachal apple which comes all the way from India only, it is 200 rupees. But we buy Washington apple for सस्ता. And किसी sorry जब गधे ने पूछा नहीं जो इंडिया के अंदर से आता है तो इतना महंगा क्यों है? और जो Washington से आता है इतना सस्ता क्यों है? Americans said we throw the waste and we buy the eats. समझा वो क्या बोला? Even the green apple is not originally from India. It is again from abroad. The Himachal apple is very nutritious and very very healthy as compared to a Washington apple. That is why he said. Or he might have got more subsidy to the American farmers. Indian farmers are not getting it. They are selling at a costly rate. We always believe bargaining is our prime motto, and we do it also. We never do it. But when my foreign friends comes, थोड़ा सा हमको बंद रखना, कि उनके सामने कैसा होता है। हमको हर चीज में bargain करने का आदत है। And ये students पहला मार्क्स से स्टार्ट होते क्या चलती है? थोड़ा क्या मार्क्स अब अपने ही अपना समझ के दे दो तो जरा काटते हो तो अपना नहीं है पराया है ना हाउ क्विकली चेंजेस द डायलॉग तो इधर अपना पराया कोई नहीं है whoever is the member of WTO he will get equal preference
इनके पास उनका मैकेनिज्म भी है. Those who do not listen or those who do not adhere, the members' policy they will be punished. But then अभी भी थोड़ा सा upper hand किसका रहता है? The West countries. And थोड़ा सा lower hand किसका रहता है? Countries of the East. You understand what I am talking about West and East? But till now there is no war, at least in the name of trade. So who has done the wonderful job? WTO. Now you understand the background. Now let us just read instead of this blankly writing. Okay, I'll give the reading to Smith. My book has gone away. You can take this. Everyone keep the pencils ready. Hey, today also these children are absent. Exams, right? I am asking exams. Sure. So let us proceed ahead. Come on, Smith. WTO is reading. Let us understand. World Trade Organization. Aim. World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. Okay. There should be no barriers. Trade between countries should be free. Underline. No barriers. ये सब डालो. Countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. Underline the word liberalize or make it simple. लिखो. बार-बार वो word आ रहा है, you will not be able to understand. Liberalize their policies. Next. WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. Underline. Remove the trade barriers. Hey, is it for a good purpose or a bad purpose? What are trade barriers? In fact, I will explain. One is tax barrier, another is non-tax barrier. याद है? Yes. याद है? एक परसेंट गलती से ऐड हो गया, बाकी लोग तो नहीं बोलेगा. क्या है? अरे बोलो. Yes. What is tariff barriers then? Custom. What is non-tariff barrier? I knew it. Non-tax barrier. Writing a notebook and key. I was expecting from you. Non-tariff का non-custom barrier. Write on barriers and write like this. But again you forget trade barrier. Sorry, tariff barrier. देखो, I can keep on teaching the same thing, but the new things gets blocked. Correct? So we may do that. Yes. This is non-tariff barrier. So these are taxes. These are, we can say, quotas, license. देखो याद है तुमको, कोई नहीं बोलता. Very bad classes. Etc. It's like your parents putting barriers for your free movement. Correct? Yeah. नहीं. नहीं करता. Okay. In politics, you have fundamental rights, is it? दो तीन fundamental rights section के साथ पढ़ लो. पापा या मम्मी को याद नहीं रहेगा. अगर lawyer है तो मत बोल. Under section so and so, IPC so and so, you will be punished. पापा बोलेंगे ये section कौन सी डाल ये से बोल. I've gone to many times police station, nothing but any crime. But for some other word, तो पहले जाते ही पहला है ना चेयर निकाल के बैठ जाने. वो पहला अपना काम, वरना वो फिर बैठने में नहीं बोलता है. फिर बैठ गया मैं. तो वो बोला हाँ साहब बोला हाँ चल बोला. ठीक है. फिर क्या करने का? पुलिस आप है कि मैं मतलब सर वो सेक्शन IPC बैठो ना बात करेंगे. ए पांडु सर आप साहब चाय पिए बाद में बात नहीं सर सेक्शन बहुत जरूरी. अरे चाय पियो हो गया आपका काम. जाइए मैंने सेक्शन में रॉन्ग बोला है. अगर वो पढ़ा लिखा पुलिस है तो वो बराबर बोलेगा ए रॉन्ग सेक्शन किसी का तुझे रॉन्ग सेक्शन बोलने के लिए अंदर लेता. बट अगर उसको सेक्शन ही आता नहीं है आप दो तीन सेक्शन उसके ऊपर मारते रहो. And he's very happy. Not now. Before I could enter my IAS exam, before, unfortunately met one of the commissioner in Belapur. That name. Unfortunately, मेरे काम से नहीं है, दूसरे काम से गया. अभी आएगा unfortunate क्या हो रहा है? Then my friend told me so and so. क्या बोले? अभी इससे क्या IAS कब दे? तो जो केस था वो छोड़ दिया पैसा. 9 लाख साढ़े 3 लाख. कौन सा मतलब पड़ता है? मेरे पास तो
टिंग टॉन्ग किया हुआ है उसका वो हेल्पर रहता है ना ये ते कार्ड में बुक कर ये ले पढ़ तेरा मोबाइल नंबर दे मतलब सर दे एवरी वीक ये कॉल क्या पढ़ाई कर रहा है हाँ सर पढ़ाई कर रहा हूँ क्या कर रहा है कुछ डाउट रहेगा तो मेरे पास आई बस आईपीएस कर मैं बोला सर मैं आईपीएस में नहीं हुआ जो भी है सच्ची नहीं and he was very unfortunate before I failed the exam. He got a transfer. वरना तो मेरा दोस्त बोलता है वो बार-बार पूछता है तेरा रिजल्ट मतलब चुप बैठ किधर से मैं पास करूंगा मैं आएगा तो साहब ने बोला कि तेरा दोस्त बोलो because he is a very close friend of mine. तो फिर मैंने बोला तेरा साथ है या नहीं है बोला नहीं अभी ट्रांसफर फिर चलिए why I'm saying even they take interest on a person or who comes little bit educated है ना और उनको हर रोज क्रिमिनल और क्राइम देख के टेंशन नहीं रहता one of my friend is not a this one he is SI now then sub inspector and वो किधर से पुलिस हाँ डोंगरी करके पुलिस स्टेशन मतलब उधर काम करता है तो एक बार मैंने गलती से उसको फोन किया शुरू कर क्राइम क्रिमिनल के साथ को तू क्या कर रहा है अरे उसको लेके जा रहा हूं तू क्या कर रहा है मन बात कर फिर से फोन करेगा अरे अभी हाजिरी है मेरा अभी मेरा बॉय बुला रहा है अंदर जा जब भी फोन करेगा क्रिमिनल के साथ ही रहता उन्होंने जब भी घर पे जाता कि अरे ये लोग से निकलेगा तो जाएगा एंड ही वाज पर डे वो तो 12 से 16 घंटे का ड्यूटी है उसका अभी सोचो व्हाट इज द माइंड ऑफ द पुलिस माइट बी ही हिमसेल्फ हाफ क्रिमिनल बराबर है उसी के साथ तो अभी एट द लेक्चर इन द कॉलेज द डॉक्टर इज इन दैट कौन सा खारगे से आगे एक जगह आपको कौन सा जगह हां तलोजा जेल में डॉक्टर काम करता है जेल के अंदर चल रहा हाउ इज द वर्किंग इन द जेल एंड व्हाट ऑल द वो कॉम्प्लेक्स में था ना वो अंदर ही है और उसका नाम ही याद नहीं आता मतलब वो अबू सलीम क्या नॉर्मल है सर उसको देख के लगता है अबू सलीम उसी के लगता है क्योंकि पनिशमेंट में अंदर है फिर मतलब अर्नब गोस्वामी आया था सब तभी मैं उधर नहीं था मैं बाहर था अभी आएगा ना ट्रीटमेंट देगा और फिर मेरा प्रिंसिपल हाउ इज वर्किंग विद दैट क्रिमिनल वेरी गुड मैन we don't believe at all these are criminals आते हैं मेडिसिन लेते हैं और कभी बोलते हैं एडमिशन के बाहर लेके जाओ मैंने तो देखते जाओ ना वो नहीं तो जाकर तुझे उठा के अंदर करेक्ट सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स ना मुझे मेरे स्टूडेंट्स का याद आता है डोर बंद ये भी पूरा ड्रिल एंड बोलता है आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ थॉट फ्रीडम ऑफ लिव तू हट पड़ेगा है ना और हमको मौका दे बात करने का It's like a parrot kept in a cage, and I'm giving the freedom of lectures. Parrot was साला बाहर तो आने के लिए। एक तुझे सिखा तो freedom क्या होता है? नहीं बेटा, आज freedom के बारे में हम पूरा लेक्चर देंगे। और freedom of thought से freedom of expression बच्चा बोले सर, back. Then I was explaining freedom of thought and expression. बोलो मतलब मैं उसका एक छोटा वर्ड में सुन नहीं सकता हूँ पर बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ फ्रीडम के तो सब करता नहीं बात बच्चों वो तो फ्रीडम सर आपके तो फ्रीडम कैसे मिलेगा ना तो फिर क्या आप कब जा रहा है मतलब किधर मतलब जा रहा किधर आप ऊपर से नीचे मत आओ मैंने से नहीं बेटा ऐसा नहीं चलता है I always believe this WTO is like that only. It is trying to protect those countries who are not having any freedom. Have you heard about NAM, NAM, non-aligned movement? So then I leave that to your students. Started at the initiative of the developing countries, WTO establishes. WTO establishes. Typical Marathi. W2O. W2O. तो कंप्यूटर बोल वर्ड कंप्यूटर Computer. WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. 165. Underline international trade and see that it is followed.
Because this is how we respect the. नहीं नहीं लेकिन यार शर्माने का नहीं. अरे why I'm saying because इससे भी छोटा पेंसिल गांधी जी को एक बच्चे ने गिफ्ट दिया था. And भाई साहब उस पेंसिल को अपना वॉलेट में रखता था और बोलता था कि the dearest gift I got it was the smallest pencil from my second standard. रखो रख इसमें क्या है शर्माने नहीं है. They use the resources whatever available to the max. I really appreciate. चलो. ना वो है 165 countries of the world. underline that. अभी लिखो more than 214 200 लिखो. Now more than 200 247 है यार. Or always follow the figures. If the figures are wrong in our UP by mistake, follow the textbook. मैंने वो भी सुना है कुछ textbook related कुछ गड़बड़ हुआ. I don't know to name the subject. सारे मेरे कान में आया मैंने कान बंद कर लिया. फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा skirmishes हुए थे. Okay, हमारे को. Yes. So be very careful. Follow the textbook first. Carry on. 165 countries of the world are currently members of the WTO July 2016. Limitations of WTO. Okay, now everyone write in a notebook. Disadvantages or limitations. Whichever is the same. Demerits, drawbacks. Okay. I brought my volume here. No. Give me that anymore. Point number 1. All the member countries do not follow its rules strictly. Second point. Its rules strictly. Second point. Members like India, Pakistan, and Brazil. India, Pakistan, and Brazil had introduced a subsidy cut. Bracket में डाल दो agriculture में. But a subsidy cut. But America does provide high subsidies to its farmers. America से याद है? Anybody watch the news? Yes. Donald Trump. What is the reason? रैली में था. I know that, but who is but there is no any political party behind that. Because 2 days before only I called Mr. Trump as the American Rahul Gandhi. Because he can also control the mouth. कुछ भी बोलता है उसके मुंह में जो आता है. 2 दिन पहले भाई साहब ने 2 दिन पहले भाई साहब ने जो बाइडेन के बारे में कुछ तो बकवास किया था. And he is to a certain extent I feel right. Jonathan Biden is John Biden. He is not ruling the country. It is that Barack Obama. He is only ruling the country. He was the vice president. ये जोनाथन तो बेचारा मेंटली पागल है. अभी गोली आपको. वो मैं हिंदी में उस गोली में मेरा नाम लिखा रहेगा कोई. बहुत लोग देखते हैं, but अपने रिव्यूज नहीं. मेरा कुछ फ्रेंड्स उधर भी है, वहां से मैं बोला है बहुत सपोर्ट करता हूं. देखिए रिव्यू में देखो, one thing I feel very sure, if a country like America, where I have seen live, where I have seen 2 candidates, they are talking against each other, but they never use the words like our Rahul or Modi does it. They'll say, sir, the party that you are representing
is having flaws, वैसे ही बोलेगा और वो भी बोलेगा yes sir और इधर ए दीदी और वो भी कुछ कम नहीं है नड्डा छड्डा and खड्डा मुझे तो लगता है कि कॉमेडी चैनल बंदे को ड्राइविंग and how many of you know very simple every Raksha Bandhan this Banerjee sends Rakhi to our prime minister in fact जब वो इंडिया में रहता तो डायरेक्टली जाके राखी बांधती है और ये भाई साहब भी बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट देते हैं अपना बहन को रक्षा बंधन पलटा कि नहीं फिर से दोनों का स्टार्ट so it's you have to be very careful it's like a WWE wrestler who gets a script from the owner that means well ये लोग रूम के बाहर बैठते हैं मेरा स्क्रिप्ट क्या अच्छा वो पहले झापड़ मारेगा फिर मैं नीचे गिरेगा फिर मैं उठेगा उसको झापड़ मारेगा हो गया चले और यही है nobody fit I mean you only imagine I am eating a person for 15 minutes after 20 minutes he is continuously eating me what kind of logic is this है ना नहीं सर वो स्क्रिप्ट में वैसे ही and हम भी बैठे थे सर वो लाइव हाँ and sorry to say it is not live also it is pre-recorded हाँ बहुत कुछ जो टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास आता है and audience भी बोलते हैं उतना नहीं है फिर ये कहाँ से इतना audience को पकड़ के लाते कॉर्नर्स हाँ but then we always believe that one thing is very sure that technology wise they have fooled the entire world what is that Neil Armstrong landing on the moon itself is a wrong news proved by many channels especially the Discovery Channel so NASA ने बोला है but अमेरिका थोड़ी उसको accept करेगा we always believe the news channels or the telecast has to be little bit authentic है ना what is authentic you might not be knowing हाँ सर वो होटल के बाहर में लिखा authentic food वो भी उसका मीनिंग मालूम है फूड अच्छा था authentic था तो उसके फूड के बाहर में लिखा था like when I say explain this WTO ना अभी भी मुझे लगता है कि it can play a very big role but it has a limit but one thing is sure at least now you cannot go controlled by they have their own HQ headquarters in California Florida but then are they leading to a big one yes it is अभी अमेरिका जैसा कंट्री अभी भी वो सब्सिडी कट नहीं मान रहा तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए सैंक्शंस लगाना चाहिए अगर WTO ने सैंक्शंस लगाया WTO का बिल्डिंग ही खत्म कर देगा फाइनेंस तो उन्हीं के थ्रू जाना है ना like if you remember IMF correct if you remember this UNO remember क्या अभी भी चल ही रहा है what UN is doing now why not it is controlling Vladimir Putin why not it is putting a sanction by God's grace you understand if India attacks without any warning to Pakistan तुरंत UN अंदर पूछे UN ने sanction लगाया अरे करेक्ट है जब लोग करते तो आप sanction नहीं लगाते because UN चलता ही अमेरिका और रशिया का पैसे से और रशिया मानता भी नहीं UN whatever it is I will hit वो कर ही रहा है ना 2 साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया but then what is on फिर उधर इजराइल का तो और कुछ गेम चल रहा है हमास अभी तक मिला कि नहीं मिला पूरा पब्लिक को खत्म करा हमास मारो अनूड हमास मार दे उसको है ना अभी कौन सा हमास उधर पब्लिक के साथ घूम रहा है पब्लिक पूरा खत्म फिर हमास 12 की मरेगा वेरी गुड द होल नेशन हैज बीन क्लियर अब तू तो जिंदा so UN has to play a leading role but UN ने चुप बैठा अभी और एक बात बताएगा तो funny thing that Wuhan lab through which the coronavirus seemed to be believed it was Donald Trump that time the president in fact वो बोला ये वायरस है कि चाइना वायरस है चाइनीज वर वेरी एंग्री को ऐसा कैसे बोलेगा अंदर की बात है जो लैब का रिसर्च का पूरा पैसा वो अमेरिका ही देता था चाइना ने बहुत स्मार्टली पैसा भी लिया लैब में भी यूज किया और चाइनीज अमेरिकन्स को दे दिया ये रखो and they were working on a bio warfare without spending money just 1 or 2 virus can spread or cause terror to the world अरे वैसे ही हुआ कि नहीं majority of the people Americans only have died so this is a new warfare technique अभी आपको मालूम नहीं था I remember Gulf War there was a bomb which we used to call it as anthrax bomb अभी ये कौन सा नया बॉम्ब है आपके घर में एक एनवलप आएगा आपने जो एनवलप को सिर्फ सामने रख के ओपन करना कुछ पाउडर रहता है इनविजिबल एंड इट गोस टू द न्यूज़ व्हाइट कलर जो आपको दिखेगा भी the time you sneeze then 10% will be infected by that virus
and they will sneeze, they will infect 10 more person. खत्म दुनिया. अभी एंगल दूर से रखो सर. उसमें ठीक है. स्मार्ट हाँ स्मार्ट. मेरे ऊपर एक नया मास्क पहना है तो ये मुंह पे चिपका लेकिन. और अमेरिका में ये बॉम्ब उन लोगों ने यूज भी किया. And many Americans were killed. And it was the evil mind of that Baghdad the hero. I call him as a hero, I really like him. But he was given hang punishment by America only. नाम सुना इराक का? ना वो तो उसको ये किया ना. I'll tell you funny. Why I'm saying wherever we feel this WTO working, now it is doing a valuable job. But is it able to control the big power? No. No. Saddam Hussein, correct. And he was a dictator, no doubt, but his rule and his kingdom was fully safe. He was caught 1 or 2 days before their Eid or something. And Muslim countries were requesting America not to hang him on the day of Eid. Or you know exactly you see they used to hang. Wow. Just to infuriate the people. Osama bin Laden, his body was not to be cremated, not to be given, it was deep put into the ocean. Yes. क्यों? अगर इनको मिल जाता आज तक तो उधर मेमोरियल क्या बाबा मक्का मदीने से ज्यादा भी ओसामा बिन का फॉलोअर बन जाता. That is the true brain of these Americans. What they are doing. And ये CIA जो है, it is not really. It's okay. We'll come and search headquarters which is in Targar. And sir को बोल के रखे मेरा नाम और नंबर नोट दो. चलो let's proceed. नहीं headquarters is Targar. और हम branch office से बात कर रहे हैं. Right on. Besides these, WTO policies were vague. How do you spell the word vague? And not clear with respect to the developed countries of the world. Not clear. With respect to developed countries of the world. Full stop. Done. Now I can again stop writing. Then we have this impact. Now we'll have positive impact only. I'll only read, keep marking quick. This chapter comes to an end today only. Positive impact we have. That is advantages. Last 20 years, Indian economy undergone drastic change. वो वेग को हटा के लिख दो due to unleashed fierce competition. How do you explain the word fierce competition due to globalization? Like a shoemaker called Bata. After a Reebok coming exactly in front of him. Don't you think Bata is facing a big challenge? Yes. So what Bata will also do? Try to fight with that Reebok or Adidas. अभी ये MNC है और Bata क्या है? Local है. But then competition बढ़ेगा. इसके बीच में Bata और Reebok के बीच में who is going to benefit it? You and me. Prices very good. Quality will also very good. And then you will be saying इतना देने का तो दे वरना सामना फिर सामना please sir सामने वो खुला है. अभी watches to be very frank. Indians buying all kinds of watches. And sorry to say, the smart watches say that I was not smart, but the watch is very smart. कब उठना करता है, मैं कितना बीबी चलता है ना, कितना मेरा हार्ट बीट है, सब कुछ वो देखता है. मतलब जो नॉर्मल बंदा है, वो वॉच को देख के वैसे ही पेशेंट बनता है. Seriously. अभी तो लोग ने बोला हार्ट बीट के साथ बीपी मेजर करेगा, आपका ईसीजी मेजर करेगा, हो गया सत्यानाश. हेलो डॉक्टर बोलते सब कुछ अगर वॉच ही करेगा तो मैं क्या करेगा. मैंने डायग्नोसिस वाला बंद कर दिया. सर एक स्मार्ट वॉच ले लो सर, सब वही करेगा, शुगर लेवल भी वही मेजर करेगा, है ना, आपका हार्ट बीट भी वही मेजर करेगा. बच्चा लेकर आके बोलता है एग्जाम टाइम में तो गलत मत लिखा, सही लिखा.
आज हमारा एग्जाम डिपार्टमेंट का मीटिंग हुआ. We are having 2 days before after the exam. हमारा मैम बोलते ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, मुझे याद आता है. ये सब लोग रूल्स बनाता है. पर हमारा 12th एक दिन में वो सारा रूल्स तोड़ देते. फिर बोलते सर what are you doing? I was trying to do only but nothing was happening. है ना? और बच्चा ऐसा वॉच लेके बोलता सर पल्स रेट बढ़ गया सर, क्वेश्चन को चेंज करो. पल्स रेट का क्वेश्चन का क्या चेंज है? सर क्या होगा मुझे मालूम नहीं है. आपका क्या होगा वो सोचो. शायद स्मार्ट वॉच को भी ट्यून करके लाया घर से, क्या करके लाया गवर्नमेंट. तभी हमारे कॉलेज में नो स्मार्ट वॉचेस नो मोबाइल. बहुत मुश्किल है. कैसा होता है? लगे तो स्मार्ट वॉच के साथ क्या करना है, वो भी करने आता हूँ, सब कुछ वही बताता है. स्टॉप राइटिंग. बोले क्यों? बीपी बढ़ा है. लीनियर इक्वेशन का एक सामने है ना सर, बीपी इज राइजिंग सो बेटर आइदर चेंज द क्वेश्चन और आई सी. So what does that mean? I am trying to measure your uneasiness. Is it correct? Is it correct? मुझे एक ही चीज पसंद है स्मार्ट वॉच का, ये बोरिंग फेस मुझे हर रोज नहीं दिखे. नया नया फेस है ना, एंड नया नया कलर्स. अभी तो क्या ऑलवेज ऑन ना, ये वो दी है सर, आप हमेशा इसको डिस्प्ले में देख सकते हो. क्या ये बंद हो गई, वो अलग है और ये अलग है सर, है ना. आजकल ट्रेंडी का जमाना है एंड योर ओल्ड इज ट्रेंडी. When I say this W2 is trending, yes it is, but then still we need to give it more what support. That's what that third point will come. There is greater choice before consumer. Underline word greater choice. Certain industries there. Open bracket cell phones and close bracket somewhere insurance, attracted MNC. Any of the companies you want me to explain? Abhi, can you name any private MNC insurance in India? Have you heard about a company called Allianz? I took my first travel insurance from Allianz. It's an American branded company. उन्होंने बोला आपका पासपोर्ट भी गुम हो जाएगा तो हम पैसे दे देंगे. हाँ, जब मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा था. But in India it is tied up with a company called Bajaj. It is called Bajaj Allianz. Allianz is an American company. So insurance is one which is like selling like hot pancake. But हमारा इंडियंस को इंश्योरेंस समझ में नहीं आता. अभी मैं एज इंश्योरेंस एजेंट सेल करने जा रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट है. पहले बोलते हैं आप देखो, फिर क्या करते? अच्छा आपके भी तो फिर आप कैसे करते हो? आप आज जा रहे हैं और कल नहीं आएंगे तो टेल इज वेरी कूली. इंश्योरेंस खोलो सर. अच्छा ये पहला बोलने था. फिर बोलता है अगर मैं मर जाएगा तो मेरा पैसा किसको जाएगा? डोंट वरी सर, नॉमिनी को जाएगा, उसी को तो नहीं जाने का. तो सर मैं आपको मनी ऑर्डर ऊपर भेजता हूं. मनी ऑर्डर में फिर तू भी लेकर ही आता है. डू यू थिंक दैट एजेंट इज कमिंग टू ओपन द पॉलिसी? इधर ऐसा कुछ पॉलिसी बता, मैं मरने के बाद वो पैसा मुझे ही मिलेगा. सर मुझे डिस्कस करना पड़ेगा. पहला पहले 1 घंटा में जान लिया. अभी मेरा क्वेरी है. तो I have remembered I have made so many insurance agent पागल हो गई. मुझे क्या सर इंश्योरेंस हाँ लेना है, बैठो ना, जब फ्री रहेगा तो आराम से उसको कुछ चाहे. हाँ सर क्यों ना, because we are sitting in Starbucks and he is going to pay for it. No sir, Latin चलेगा, मौका वो भी चलेगा. and sir कुछ केक्स हाँ मगर सर 1 घंटा हुआ उसको मालूम पड़ा कस्टमर 1 रुपए का पॉलिसी नहीं खोलने वाला है. सर मुझे इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट है. नहीं बैठो ना, बात करेंगे. और एक कॉफी नहीं सर मेरा पे. अरे मुझे चाहिए मुझे मैंने सारा 2 कॉफी पी लिया, 3 पीस भी खा लिया. बट एक इंश्योरेंस डोंट वरी, नेक्स्ट मीटिंग में हम दोबारा डिस्कस करेंगे. चलो नहीं सर मैं नहीं मिलूंगा. नहीं मुझे मिलना है. सोचो अगर दिन में बेचारा 4 क्लाइंट ऐसा निकला हाँ और ऑफिस में जाके 2 झापड़ तो कितना बेचा पैसा कुछ नहीं खरीदा. क्या तू खरीदा? अगर एक कस्टमर मिला था प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, इतना ज्यादा कितना खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा उसने. तो फिर क्या कर रहा था? सर टीपी खेल रहा था. तो ये जो इंश्योरेंस है ना अभी इंडिया में थोड़ा पिकअप हो रहा है. पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेजेडीज, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डेंजर. मुझे तो लगता है आगे जाके बच्चों को भी इंश्योरेंस देना पड़ेगा.
before they are getting into the exam hall. है ना, इंश्योरेंस निकाला अपने लिए और टीचर बन गई वो इंश्योरेंस का पॉलिसी सुन के. Why? टीचर्स का पॉकेट से पैसा जाएगा. ऐसा नहीं होगा, but we have seen. So insurance है, travel है, transport है, communication है. Everywhere this insurance has jumped in. Let us go to the next point. Local companies underline also benefited. Third, next point. Several companies are able to benefit the increased competition. Underline the word increase. ये सब आपको नोटबुक में लिखने का है, which I am not writing now. Now open bracket from Tata Motors, Ranback C, Asian Paints, Sundaram Fasteners. ये सब local companies है. Globalization underline. New opportunities for companies. And underline the word host of. Host के जगह पर लिखो new services. ये bracket open करो, data entry and close bracket somewhere in engineering. That's all. Put the question in a notebook, answer ये page पे डाल दो. Explain, I'm giving positive impact of globalization in India. Explain the positive impact of globalization in India. Explain the positive impact of globalization in India. What is that page number? 209. UT डाल दो. And आंसर घर जाके लिखना, यही उधर आंसर शीट में लिखना था. और learn it करो. It is easy also. We are going ahead of this chapter. I'm just not reading that word. Here we are having limitations of globalization. It seems to be too big. I'll give only 4 lines. List out. I'm giving you the question. Main limitations of globalization. List out the main limitations of globalization. If it is more than 2 marks, you have to write what is globalization. Okay? I'm directly giving limitations. Point number 1. MNC companies focus only on consumer-based industries. MNC companies focus only on consumer-based industries that's with high profit. Second point, high investment was not observed in core areas. High investment was not observed in core areas. Put a hyphen, education, power, energy, health sector, etc. Power, education, health sector, etc. Power. Next one. और एक ही पॉइंट ना, 4 पॉइंट रहेगा. दो ही हुआ है. और 2 बाकी है ना. G लिखना, कैपिटल G, मतलब ग्लोबलाइजेशन. Benefited only the rich and well-off sections. Rich and well-off sections, neglecting small, medium, and poor sections. Small, medium, and poor sections. But इनके लिए कुछ नहीं बनाता है. Then the last point. In several parts of India, due to G, what is G? Globalization. Very good. Permanent closing down of several small units.
is witnessed. Closing down of small units is witnessed. Change the para. Is witnessed. WITNESSED. Change the para. Hence, G, no doubt a beneficiary. BENEFICIARY. No doubt a beneficiary, comma, but government needs to regulate for the masses, for the masses. MASSES. अभी पढ़ के देखो, मैं explain नहीं करूँगा. I hope you will understand with one reading. My notes are simple and straightforward. Okay. ये इतना बड़ा दिया है. मैटर तो उतना ही है जो मैंने आपको लिखा. ये पीछे का. वो just छोटा-छोटा पैराग्राफ है. Interlink introduction. नहीं समझो तो बड़ा. With this chapter, my economics portion will be complete. There only अभी agriculture है, lifelines है, industries है. तीन chapter. I'm planning to wind up your batch as early as possible. Not running away anyway. Be here. But then I feel be happy. Then revision वगैरह होगा, क्या वरना बाकी lectures को मैं devote कर दूँगी. ठीक है? Monday है ना मैं, बाकी तो नहीं है. ठीक. Then there is small paragraph called only put the heading. We will mark and read from here. Struggle for fair globalization. Only put the heading in your notebook. Now, what is this paragraph? देखो अभी हम लोग ने ऊपर का पैराग्राफ में क्या लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट फेयर, है ना, अनफेयर. पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फेयर बना सकते हैं. व्हाट इज फेयर? दैट इट इज गिविंग बेनिफिट्स टू एवरीवन. देखो अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आता है, इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. बट वी शुड नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन सच अ वे दैट ही नेवर कम्स बैक टू लाइफ. हाँ, इधर ही वो मूर्छित हो गया. But we have to welcome him. बकरा को काटने से पहले हम लोग खाना डाल के ना सच के जब मालूम पड़ा रेडी है, वन धन चल खत्म. So now we always believe the foreigners are the people who bring with them forex. And to be very very safe to say, every foreign company wants to open their office in India. Like we have already 2 iPhone establishment in BKC. If you have visited it, Yes. I have seen one more new is going to come. मैं बहुत सोच रहा हूँ कि नवी मुंबई में आ जाए. सब्जी वाले से भी ज़्यादा लाइन उधर ही रहेगा, है ना? So iPhone क्या मेरा फोन किधर नॉर्मल फोन नहीं, तो आप भी लाइन में लग जाओ सर, है ना? So this iPhone coming to India is a very very positive sign. अभी तो वो फॉक्सकॉन बोला है, अभी तो मैं स्पेयर पार्ट्स लेकर आया है, फुल मैन्युफैक्चर इंडिया में करूंगा. एम्प्लॉयमेंट, चीप, है ना, क्वालिटी, एवरीथिंग कम्स. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, स्ट्रगल फॉर फेयर. हमको वो चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट अलाउ देम टू क्लोज डाउन आवर व्हिच बिजनेस, existing business. I'm reading this market. It has been observed that globalization has not benefited everybody. People with educational skill, wealth have made underline best use of the opportunities. Globalization underline becomes a reality of the day. Unless benefits of globalization are shared to all, opportunities created by it cannot be underlined, cannot be a reality. So the responsibilities, make a rectangle box, lies onto the government. ये responsibility कौन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट. उसको मानना पड़ेगा कि ये जो मार्केट फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, it should benefit whom? Indians. Let's see. The Indian government also needs to see, underline, labor laws are properly implemented. उधर लिखो over protection नहीं चाहिए. किसको? Indian laborers को. है ना? Second, it needs to be underlined, protect small producers till the time they become strong. अभी जैसे बाटा जैसा कंपनी को थोड़ा प्रोटेक्शन दो, आगे जाके क्या पता वो रिबॉक से भी अच्छा शूज बना सकते हैं. एक
What is negotiating? उधर आप अपना word bargain लिख सकते हैं. अभी WTO से क्या bargain करेगा? उधर लिखा है देखो. In the situation underline uneven equation of power, the producer and laborers from which countries? Weaker countries will also receive. मतलब आज अगर बड़ा एमएनसी अफ्रीका में जा रहा है, अफ्रीका को और वो लूटने के लिए नहीं सोचेगा, अफ्रीका को भी बेनिफिट देना पड़ेगा. This is not the first time. Earlier he was doing 2-3 times. I just ignored this case. Massive campaigns and like representation have influenced important decisions for relating to what other for trade and investment. बस उतना ही. चलो done. Over. Read through. We have good 1 minute to go for all. Done. चलो उसको switch off करते हैं. Hey, listen, map working, did I teach with you guys? No. I have not started. So next lecture.